Okay, so good morning everybody and once again welcome back. Today we are on the day number 25. Panchwa week is going to be over, fifth week is going to be over now with this. If I say we have majorly three topics left. One is CMDB or CSGM. Second is about my scripting. And third is about the ServiceNow to ServiceNow integration demo. Okay. And the fourth small one is a email notification. So approximately we have done 70% of the course now. Okay. But still few small topics are there, which is going to be take time. Like CMDB will take approximately 3 days. Scripting will take again 3 days. Integration take 1 day approximately. So 2 week का आसपास हमारा अभी टारगेट और रहेगा काम करने का. ठीक है. Today topic I'm bringing little light again. ठीक है. We see that we are able to create. Just to interrupt, sorry. Good. Will you take the demo? Else I'll join with the tablet because my laptop में screen clear नहीं दिखता है. No, we'll postpone to the Monday because everybody will be there. Okay, so I'll just drop the call and we'll join from the another device. ठीक है, चलेगा, no problem. ठीक है. So I have some problem. What happened, Mac? Sorry. I thought of might be going to check it beginning of the class, but I also use some problems because the word you had given, but it's not getting triggered. I tried, but there's some problem in it. So maybe we can discuss in the class. Yes, we can discuss, and maybe because Monday everybody will be back, so we can discuss together. We can see the troubleshooting step as well. Okay. Oh, that's great. So today topic is little different now. I'm working as a manager, incident manager, or the problem manager, change manager, service manager. I want that whenever I log in or when I want, I can see the reports. क्योंकि जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग होते हैं ना, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द रिपोर्टिंग्स. डेटा क्या है, वेयर वी आर एट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द रिपोर्ट टेल मी. ठीक है. इन सर्विस नाउ देयर आर ways to create a report. ServiceNow provide out of the box reporting module, reporting and dashboard module, which we say. Also, we can use the what I can say, platform analytics, which is like advanced version of reporting, which is not part of our training, but normal standard reporting we are going to be discussing. Okay. Now the question come, I want a report in the bar graphs, in the pie chart, in the donuts, in the score, in the pivot table. Multiple questions are there. Can I export that report as well? But Atul, I am working as an incident manager and I have 6 different reports. I'm not in capacity that every time I go to each and every report and see the exact or current data. Can I bring everything together on a one place? Another point. I want to see the report of incident and the SLA table together. How to club these two? Third, ask. I want to get a report if anybody changed the state, or I want to see a report that if assignment group gets changed in an incident, I want that report. कि कितनी बार और किस टीम को ये टिकट असाइन हुआ है. So 3 different asks and 3 different topics we are going to be discuss possibly. Okay. So number 1 is the reporting, standard reporting. When I say about the standard reporting, you can go and you can create the report. If you have a reporting role, you can check that what roles are required. But if you are having the ITIL role, you can create a report very easily. So I can go here and search for the reports. And I can see the reporting module here. I can go view and run and get started. Let me say view and run. When we purchase a new phone, nowadays in phone, we are getting a lot of pre-installed applications like WhatsApp, Amazon, Gmail, Outlook, TikTok, Snapchat. These are the pre-installed apps. Up to you. You want to use it or you don't want to use it. That's totally up to you.
In the same manner, ServiceNow also provide a lot of reports which is out of the box completely, which is ServiceNow provided us. But remember that we are human being. हमारा मन नहीं भरता जो हमें मिल जाए. We want more, we want customize, we want our wishes. We want to do this, we want this, we want this, and other things will be there. So the recommendation says that whenever you want to create a report, please go and check in the out of the box report. Okay. So if I scroll down, so I can see 744 reports in my instance. Why 744? Because I have installed multiple plugins. Maybe in your case, it will be like a 300 or 400 or 500 something. So don't get confused at all. आप में तो बहुत सारे हमारे में कभी है क्योंकि I have installed multiple plugins to do that work. ठीक है. Now what I can do? अतुल बस 744 में यहाँ तो कोई आपने लिस्ट में बताया था या सर्च होता है तो सर्च है ही नहीं कुछ. How we can search it? So you can go here. I want to see a report on the change. Just type and it will give you the three things. I want a report where the change, where the title contains change, where the report name is change, contain change, or where the change table has been used. I say report. So these are the reports where the word change has been used. 35 reports, and you can see multiple types: pie, list view, pie, what I can say, histogram, single score, again graphs report, or the bar part, bar and pie charts kind of things. Trend you can see here. Okay, that is the one way. If you see that these are the my reports, which is created by me. Group report, which I create and share with my group. Global reports, which can be accessible by everybody without any restrictions, and all reports. Combination of this plus this plus this. So you can see all reports will be. अरे अच्छा वो है ना filter है. Let me remove the filter. ठीक है. So now you can see 884. In the all, everything has been come together. That's the one way. Can we make a favorite? Yes. Click on this. You can make a favorite. Now I want to see only favorite reports. Click on this. Only favorite report you can see. I can remove. That's fine. I want to see the reports which is already published. You can go and see here. Published. ये पढ़ना कि what do you mean by the word publish? ये publish reports है. Means if you share this link with anybody, he or she can also see this report. That is the meaning of the publish. My understanding says. Schedule will come later. Okay. So now we have these reports, and definitely you can go and check here that what are the options available. Show 20, 30, 50, how many you want to show in the one page. Okay. I want to get a new report. You can click here, or you can go here and you can search on the create new. As this is a standard reporting, so we cannot use two tables in the standard reporting perspective. मतलब अगर मुझे incident and I want to create a report on the task table, sorry, incident and SLA table together, I can't use two tables in a single selection. No, उसका solution है, but not now. So let's say I want to create a report on the incident table. LNG. Now, one thing which ServiceNow give a good thing. Data source means I want to get this data from third, or I can not third party, what should I say? From a specific place. मतलब data sources में क्या है? कुछ inbuilt conditions I already created in that particular part. So let me open this in the separate window. Okay, let me come here and show you. Data sources. इसमें combine है क्या वर्ड ये? नहीं ठीक है, data source यही है. ठीक है. Data source is this one, but it's import set करके दिखा रही है. I don't know if it's import set. Okay, so we can see these things. So नहीं ये नहीं है. Data sources, no, not this one. So data sources are kind of a predefined conditions on a table which you can run and you can create a reports. So like I want to see on the problems open. Click here and click on the run.
कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस डेटा सोर्स इज कमिंग विद दिस प्रीडिफाइंड कंडीशन. So it depends, like I want that anybody who is working under me as an agent, if they want to see the status, they should use this report. So I can create a data source report कि भैया आपको अपना आपको you want to see only those instances which are open, you can use the data source. That is the number one part. Second part, table. I can define a table here. Incident, change, problem, request, knowledge, task, SA task, P task, C task. Any table you want, you can use any table here. That is the second part. Third part, external import, which is very important point. Now let's say Amisha has a record of the new joiners. Okay. Let's say across India location, in the April month, 5,000 people are joining my company. Before I create their account, I want to do some analysis. इनका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. So what I can do, I can use external import. It means I can use any database or any Excel sheet which contains some data. Let me come and see here user table का, जैसे ये, ठीक है. If I scroll down, anything else? Let's say ये लेते हैं, use acceptance testing saved template. ठीक है. Let's say this name LNG1. ठीक है. और it will expire in 1 week, 2 week, 1 month. और जैसे मैंने कहा नहीं अभी 1 वीक के लिए रखते हैं. अपलोड. This data is not actually in service now. ये सिर्फ एक्सेल को रीड करके लेके आ रहा है एंड गिविंग मी अ रिपोर्ट हियर, ताकि आप कुछ भी बना सको इसके ऊपर. देखो उसने क्या किया, उसने जो हेडिंग थी उसको भी रीड कर लिया एज ए वन ऑफ द पैरामीटर. ये है एक्सटर्नल इंपोर्ट का बेनिफिट. ठीक है, जनरली वी यूज इट. ठीक, एंड द लास्ट इज कॉल्ड द मैट्रिक बेस. दिस इज व्हाट another topic we are going to be discussed. जिसका ask था, I want to see the report of incidents which has been assigned 3 times, 4 times, 5 times, and I want to know the table, group name as well. ठीक है, so this is a fourth type, group, multiple items kind of things. Now I come to the basics one, which is important for us. ठीक है, table. I'll come here. Sorry, I'm saying LNG. Let's say incident table. And I'm selecting incident. ठीक. Now, if you come to the type, this area will tell you that what type of report you want. You want bar graphs, you can use it. You want pie donuts, you can see it. You can see time series, you can see here. Multi-dimension pivot table as well, you can see here. Scores you can see here. Other charts, funnel you can see here. Map you can see here. Up to you what type of report you want. But remember, on the basis of the type, the configuration will get changed. पानी गर्म कर दो. That is a one thing, that is a type. But where you want to use that water? Tea, coffee, या आपको उसमें कुछ कटोरी में रख के घी गरम करना है, या something you want to boil it or you want to keep it little things, that is a configuration. So I want to create a report of the histogram. Take simple example and configure histograms. So if I come and see here, run. कोई डेटा नहीं दिखा रहा वो तो क्यों? Let me try to save this first and now run. टेबल तो सही लिया हमने. Why it's not showing anything? Let me go and change measured. Fact. वो कह रहा है कि किसके बेस पर मैं आपको रिजल्ट्स ला के दूं, वो तो बताओ मुझे. So I said go for the measured. अभी 1 और 2, 2 और 3 क्यों आ रहा है? मतलब कि maybe they have group by kind of things. ठीक है. So it is totally on your need. That what you want. And देखो इसमें स्टाइल पता नहीं क्यों ऑफ है इसमें, but style should be there. Let me save once if I can see. ठीक है.
Now let me take a simple example or some other example of same thing. Let me go and change the type as the pivot. And I'm taking multi-level pivot. Pivot क्या होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं. ठीक है, तो I want to show my data on the basis of the assignment group as a column and priority as a column, okay, and row as a impact and urgency. Simple example and click on the save. बाकी मैं बाद में बताता हूँ, एक बार इसको रन करते हैं. This is my pivot table. If you click on this, it will open the records in the list view. ठीक है, असाइनमेंट ग्रुप एम्प्टी है जहां पर वो ये है, एप्लीकेशन सपोर्ट है वो ये है, डेटाबेस, डेस्कटॉप साइट, हार्डवेयर, आईटीसी चैट, मेजर इंसिडेंट, ये सारे ग्रुप्स हैं और इनके नीचे ये सारे मेरे इम्पैक्ट और अर्जेंसी है. ठीक है, I want to see the count. I can see here. I want to see the average and run. Average. नहीं, I want to see the sum. Sum देख लेते हैं. Up to you, your business need. कुछ नहीं आएगा sum में भी. I want to see the maximum. कुछ नहीं आ रहा. मतलब formulas is not running properly because of the nature of the data or the nature of our report is like this only. ठीक है, so generally in the this thing what I can say, pivot we use always count. ठीक है, now I can do the styling as well. Leap up होती जिसे हम कहते हैं और like makeup. This is what the styling says. Let me run this. ठीक है, it says do you want to display 0? I said yes. जहां खाली वहां 0 कर दो. Display line, row lines. I said yes. Column lines, yes. And save. तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है. ठीक है, और you want to change the title. Share always. Chart title LNG report. Chart size, I said make it as a 12. Color, rest you can do and click on the run. पर इसने येलो कहाँ किया? चार्ट तो है ही नहीं एक्चुअली, इसलिए. ठीक है, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन हियर. अतुल, ये तो रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज इंडिकेटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस नाउ. मतलब जब आपने इंस्टेंस लिया होगा, ऑल इंस्टेंट गेट क्रिएटेड, तो काउंट तो बहुत ज्यादा आ गया, 6000, 7000. लेट्स से अमीशा वर्किंग इन अ कंपनी एंड दे आर यूजिंग सर्विस नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years. And Amisha's boss says create a report on the incident. Boss, though for the 2 years the count is more than 2 lakh. Give me some right way. Okay, I want a report only for the last month. Then how you can do this particular part? We can click on the all here, and here we can do the conditions. I want to say created. और लेट्स से इसको करते हैं कैटेगरी साइज हल्का, वेयर कैटेगरी इज ओनली इंक्वायरी एंड हेल्प. एंड नाउ द छोटा होगा ना वो थोड़ा सा. तो क्या हुआ, इन दिस टेबल आई एडिड दिस कंडीशन कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जहां पर वेयर द कैटेगरी इज इंक्वायरी एंड हेल्प. सो यू कैन ऐड एंड और एनी कंडीशन यू कैन एड इट हियर एज पर योर रिक्वायरमेंट. Now the another benefit which ServiceNow give us is called the related list condition. Now if I open any incident, let me say I go here, incident. ठीक है, let me open one incident and show you. Let me show you one thing. Now you can see the rated list, right?
मुझे इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक रिपोर्ट बनानी है. बट अतुल अभी तो यू जस्ट सेड ना कि दो टेबल्स के एक साथ रिपोर्ट नहीं बन सकती डेफिनेटली. बट दिस इज लाइक अ वर्क अराउंड फॉर मी. I want to see the incident where categories inquiry and help and यहां पर देखो कि कौन कौन से मैं कर सकता हूं. मेरे को चाहिए टास्क SLA. कहां पर है टास्क SLA? और लेट्स से इंसिडेंट टास्क. इंसिडेंट टास्क असाइनमेंट ग्रुप is not empty. Let me run this report. क्या पता कुछ भी ना है. बोला कुछ नहीं आया. No matching record. Is empty. ये है ही नहीं. मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसमें आई गेट दिस इंफॉर्मेशन. चलो ठीक है, मैं चेंज करके देखता हूँ कुछ और. लेट्स से आई वांट टू चेंज देखो ये ले अफेक्टेड CI. कॉन्फ़िगरेशन आइटम इज एनी कर देते हैं, इज नॉट एम्प्टी. अब देखते हैं किसी में है कि नहीं. हाँ ये देखो ये आ गई रिपोर्ट. ठीक है. सो नाउ दिस रिपोर्ट हैज बीन ओके. ये ग्रीन कलर हो गया. अच्छा ये येलो ग्रीन वाला देखो. दिस रिपोर्ट हैज बीन रन with this combination and this combination. It means now the reporting is getting little easy that we can do the reporting on the related list as well, which was not available earlier to us. Okay, but again I am repeating the same thing that your configuration totally depend on your type कि किस type पे करना है. ठीक है. One more thing, even though I don't have much experience in that part, but I can say configure the function field. मतलब मुझे इस रिपोर्ट में कुछ फंक्शंस रन करने हैं. It's save and continue. I said yes. I never work on this function field, but you will get little idea on the community. Okay. What type you want to return? I want a duration. अच्छा duration मतलब कि मुझे दो डेट्स हटाने में से माइनस करना है. Add operation. I said date difference. किसका डेट डिफरेंस चाहिए? Created का. ठीक है. एंड रिजॉल्व का, क्योंकि दो होंगे तभी तो काम चलेगा ना वो. ठीक है. वो देखो syntax is required for this function. Service now build the query automatically for this one. Label lng and save. And now let's run. क्या आ रहा है पता मुझे भी नहीं क्या आएगा, बट लेट्स सी कुछ तो हो गई. इसने रिटर्न कहाँ किया रिजल्ट्स को? इट शुड रिटर्न समवेयर. अगर फंक्शन फील्ड बना है मेरा, बट इट शुड बी रिटर्न इट, और आई एम मिसिंग समथिंग. ठीक है. बट because my understanding very limited on this particular part, but yes, we can create the function field as well on this particular stuff. ठीक है. Now let me save this. Save is important. जब तक save नहीं करोगे ना, lot of options will not work for you. ठीक है. Like in the same manner in the WhatsApp, till the time you did not save anybody else or the other number, you can't see the status or you can't see the DP and all things will be there. ठीक है. Now I created this report. Okay, before that, any doubt? Yes, Mac, go ahead. Mac, go ahead, please. Sorry. So we are searching incident from incident table, right? And Right. when you set a condition assignment group is not empty, it was showing zero, not showing an incident. But we have so many incident which is not assigned assignment group. No, we are searching on the related list. Yeah, हमने but wait. Yes. Okay, let's understand this.
So what we are doing, we want a report of the incidents where number one category should be inquiry or help. Okay. And in the related list, affected CI is not empty. So we go to the incident table, we put this condition, and then under related list, we put this condition as well. And then it brings result for me. If I remove this, let me remove this and run now. अब देखो कितना बड़ा आंसर आ गया आपके पास और फील्ड आ गए ना, क्योंकि उसने ये कंडीशन तो फुलफिल करी एंड कंडीशन के साथ. इफ आई रिमूव दिस एज वेल एंड रन, आप देखना, लेट इट बी रन क्विकली. क्या हो गया? अच्छा, वो भी इस कंडीशन पे है, रिमूव दिस एज वेल. हाँ, अब देखो, अब रिजल्ट टोटली चेंज हो गए. तो दिस कंडीशन बिल्डर इज रिक्वायर्ड टू नैरो डाउन योर सर्च टू योर रिपोर्ट. मुझे सिर्फ लास्ट के 1 महीने के रिजल्ट्स दिखा दीजिए बस. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, राइट? सो दिस थिंग आई कैन डू इट हियर. बोलो मैक. Okay. A little bit It confusing. depends on the your business requirement. Maybe I want to, let's come back here. I want to see the calendar format. ठीक है, and click on the run. अब देखो ये मेरे इंसिडेंट कैलेंडर फॉर्मेट में आ गए, बट ये तो सारे हैं जब से बाय द टाइम आई टेक द इंस्टेंस, सो आई कैन पुट द कंडीशंस हियर उसको नैरो डाउन करने के लिए. ठीक है, now I can give you homework. You need to be create a report of the changes or the incident or the problem or the request or the knowledge articles, anything you can pick up, where the incident get created between 9 a.m. to 5 p.m. any day. मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट बताइए in the month which created between 9 a.m. to 5 p.m. कैसे होगा ये आपको देखना है. छोटा सा यूज केस है, बहुत बड़ा नहीं है. ठीक है, there is a one thing. Now I want to give a try again to you guys, even though I have no much experience in that particular part. Let me go and create a bar graph. ठीक है. Before it, I have a doubt. What? I mean, where these formulas and everywhere we can see that on what, like you told some, and there was count, and where we can see those formulas. Because which columns were there included? I'm not getting it clear picture. मतलब which column is? Like you impact was there, priority was there. So how okay. can? ठीक है. Let me do one thing. Let me create a simple list report. ठीक है. And you can go to the config. Because definitely queries will be there. DBM SQL queries they have applied. In the background they applied. It's a complete interface for us. I mean, we don't want to be and we are not interested to write a queries. ठीक है. So your type will decide and your configure will appear. Now if I say run, तो मैंने बोला ना कि आपका टाइप, आपका कॉन्फ़िगर आपके टाइप पे डिपेंड करता है. अब ये देखो, इफ यू सी ओनली दीज फील्ड्स आर कमिंग, राइट? और ये बहुत सारे हैं, मुझे नहीं चाहिए इतने सारे. आई वांट टू रिमूव, गो टू चूज कॉलम, हटा दो यहाँ से, क्या नहीं चाहिए. Okay. And short I want इंसिडेंट के कॉलर का मैनेजर भी मुझे शो करना है यहाँ पर. I want to show David Miller manager as well. How I can show? Same thing. Go here. It's caller, right? Caller. जहाँ प्लस है ना, इसका मतलब ये रेफरेंस फील्ड्स हैं. And you can extend it by the dot walk. ठीक है. अब
आई एम इन द इंसिडेंट फील्ड, कॉलर के अंदर आ गया। अब कॉलर में क्या है, मुझे चाहिए मैनेजर, मैनेजर क्लिक किए, नाउ आई कैन डू। ये सब आपने किया हुआ ऑलरेडी, लिस्ट व्यू सब हमने किया हुआ है। देखो अगर मैनेजर नहीं है तो एम्प्टी शो करेगा। आई वांट टू डू द ग्रुप बाय, अप टू यू। लिस्ट व्यू में हमने सब किया है, इट्स ऑल योर रिटर्न ट्राई। सो ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट वन रिपोर्ट फॉर ईच टाइप, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, स्कोर है, एवरेज है, कैलेंडर है, कंट्रोल है, फनल आइकन्स है। अप टू यू, आई वांट टू बी सी द फनल। अब देखो फनल में अगर मैं करता हूं, लेट्स सी, देखो ये आ गया फनल में एम्प्टी। नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बाय इम्पैक्ट। इम्पैक्ट लेते हैं, इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो ये ना हो गया ना फंडल, हाई का इम्पैक्ट इतना है, 3 वाले इतने, 2 वाले इतने हैं, तो उसने शो रिजल्ट शो कर दिया फंडल में मुझे। इफ यू वांट टू सी द डेटा, क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी द डेटा एज वेल, ये with percentage to give it to you. Up to you what you want to do. ठीक है, and if you go to style you will find a lot of new things. Now one more thing which I want to do the troubleshooting. See how this drill down view is working. Drill down view. Try करके देखना, very interesting topic, very interesting topic. मैंने ट्राई किया बट मेरे से हुआ नहीं है। Let's say I get a report where I want to see the incident for the last 1 month. But I want the report should be segregated in the 3 different sections: day wise, week wise, and month wise. Single report, लेकिन 3 व्यू चाहिए मुझे उसमें, day wise, month wise, and week wise. ये ऑप्शन आपको ड्रिल डाउन में मिलेगा। Let's give a try. I'm not 100% sure कि कैसे होगा, but try करते हैं। Let's say I'm creating a new view. LNG and submit. Now save. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ये यहाँ, हाँ ये देखो, ये ड्रिल डाउन व्यू। नाउ आई कैन ऐड अ न्यू ड्रिल डाउन। कौन सा ऐड करना है? अच्छा देखो, इसको कैंसिल करते हैं, ऐड करना है, यस, सेव एंड कंटिन्यू, नहीं डिस्कार्ड चेंजेस, कंटिन्यू, नया ड्रिल डाउन बनाते हैं। मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू टेब, न्यू रिपोर्ट इन द सेम हेलो पर मंथ, द टेबल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, टाइप कैसा टाइप चाहिए मुझे टाइप चाहिए लिस्ट व्यू। अच्छा, कॉन्फ़िग कॉलम्स मुझे चाहिए सिर्फ 5, एंड रन एंड सेव। अब देखो सिंगल रिपोर्ट में आई कैन सी 2 व्यूज, ये तो टोटल हो गया, और हेलो पर मंथ ये हो गया। ये ड्रिल डाउन है। इट मींस इन द ड्रिल डाउन you need to be create the 3 different reports. ये एक यूज केस था, किसी ने कम्युनिटी पे पूछा था, and I was not able to do that part. Then I follow that answer and I learned this thing. That you have to create 3 different reports. मतलब ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है कि सेम रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट दोबारा बनाओ जो इसी में से निकल के आ रही हो, वो ड्रिल डाउन होता है मेरा। So create a report and I want to see the drill down by priority, by impact, by week. जितने मुझे ड्रिल डाउन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें। You can go and you can pick up this. Now I can see. So सिंगल रिपोर्ट में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है,
Now I come to this save drill down. Okay. Now this report has been created. I want to share this report with Amisha or everybody. Click on this. I can share it. I can share with myself, with everybody, or everybody means I can put the role that I tell only can see this, or I can put group and the users. किस group को देना है, किस user को देना है, I can do this particular part. Easy to do. Nothing to be worried on that particular part. Come to second option, schedule. I want this report should come to my mailbox every day morning 5 o'clock. And this is called scheduling. Okay, this is called scheduling. And here I need you guys to be think from the consulting perspective. Agar in my house, if we are the 4 people, or everybody in the morning put the alarm on their own phone. 6, कोई 6:15, कोई 6:30, कोई 7, कोई 7:15, कोई 7:30, कोई 8, कोई 8, 8:15, 8:30, 9. So it will be run a long time. So being a consultant, we have to be think that if anybody is requesting to schedule a report, we have to be check a lot of things. क्योंकि reports का ना impact सबसे ज़्यादा performance पे पड़ता है. That impact पड़ता है. Let's say Amisha is in a school. Exam duty is going on. ठीक है, she's in exam. Final exams चल रहे हैं students के और she's doing the final exams in the duty. Amisha's kid came to school and say, "Mom, I want to eat Maggie now. Or give me this color of sketch pen." ये क्या है? P cards है. In the P cards, if you start searching the color, sketch pen color for your kid, it may impact the class performance. The same thing applicable for us. Means if anybody say, "Hey, I want to schedule this report," being a consultant, being the operation team, we have to be think that if I schedule this report on this particular time, is it going to impact my performance or not? इसलिए almost jobs run in the midnight. रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1, 1:30 ऐसे चलते हैं जॉब्स. ठीक है. Also depend कि आपकी रिपोर्ट किस टेबल पे रन हो रही है. Let's say if I'm creating a report on the incident table और मेरा डेली का इंसिडेंट का काउंट कम से कम 2000 है या 3000 है या 5000 है. जैसे बैंकिंग सेक्टर है, वहां पर काउंट ज्यादा होता है, 5000 6000 का रहता है. Then it may impact the performance. Plus on the table what conditions you are putting it. मुझे वो भी उस पर भी डिपेंड करता है. Like the same example, Amisha told to the kid, go to the second room, open the second drawer and get the yellow color toy. If I want to make it the more complex, I am sitting here, take 10 steps, take right, then 10 steps, take left. Oh, you will get the 3 wardrobes. Take 5 steps, open the second wardrobe, go to the second place, open the drawer. You will find the 10 or 15 yellow color. Pick up the smallest one in that. अब ये क्वेरी कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई? कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो बच्चे को टाइम भी लगेगा उसको ढूंढने में. So these are the things which you have to be take care when we are scheduling the report. ठीक है. We can schedule a report and we can add to whom this report need to be sent. You can add users, you can add groups, and you can add your personal email ID as well here. You can add any DL as well. Number 1, up to you. ठीक है, हमारे इंस्टेंस में मेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने ईमेल का टॉपिक नहीं किया. You can put the subject here. ठीक है. I'll just complete this. You can put the message, "Hello everyone, find this report," and you can decide the type. PDF, landscape या PDF auto resize to fit the content. ये अपने आप होगा सारा काम. Now, depend on the type of report, this thing will get changed as well. अगर आपका बार ग्राफ है तो PDF नहीं होगा, सिर्फ PNG होगा शायद या JPG होगा या PDF होगा, JPG होगा, लेकिन कुछ और नहीं होगा. ठीक है. You want to zip in? I can say yes. Include with. This is the another thing which I learned from the community, and that is the reason I always encourage you guys, go to the community. There was a question came in the community
that I want to send 2 reports in a single scheduling report. Because I was not aware, so I said no, it is not possible. Then someone else replied, Atul, it is possible, and we have this option called include with. Means here I can add my previous reports which I want to be sent with this. Which is already scheduled, I can put it here. It should show me actually. So we can add the report here. कि ये report भी जाना चाहिए, ये report भी साथ में जाना चाहिए. ठीक है? So that is include with. And paper size, letter A for legal custom, you can do that part. Important thing is this. ये. कब भेजना है? Daily, weekly, monthly, periodically, once on demand, business calendar, these things. इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, which someone give already an idea to the service. Now I read somewhere in the community that I want to send a report every second Monday. Every second Monday of the month. वो option इसमें नहीं है. Monthly तो है. If you click on monthly, it will ask you the day. कौन से डेट को भेजना है? पहले, second, third, fourth. But my question is that I want to send second Monday of each month. वो ऑप्शन इसमें नहीं है. To do that part, you have to write the code for the same. तो उसमें फिर आपको कंडीशन डालनी पड़ती है यहाँ पर. And you have to put little code here. ठीक है? So we have different options here. And you can put the timings. Omit if no records. अगर रिपोर्ट खाली है, जीरो है बिल्कुल, कोई रिपोर्ट कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, then don't send the report. तो रिपोर्ट नहीं भेजेगा. This is called the scheduling. Till this point, doubt, question, clarification. Why they inbuilt reports by ServiceNow, out of the box reports by ServiceNow? Sorry, why? Why they out of the box? ServiceNow has given out of the box reports. Yes, yes. Because everyone will create their own reports now. नहीं, So what नहीं, is the use of that? अरे नहीं, ऐसे कैसे? My father is now near about 67, 68 somewhere. ठीक है? He know how to use the phone, but he don't know that how to download the apps. To easy their work, what companies are doing, they are pre-installing the apps in that. कि WhatsApp तो सबको चाहिए ही होता है, WhatsApp भी इंस्टॉल करके दे दो. Gmail भी सबको चाहिए होता है, Gmail भी इंस्टॉल करके दे दो. This is the reason that they have a out of the box reports. ऐसा नहीं है. It's not like that कि I always get the new reports. नहीं. This is what your and my work is there. Customer says I need these reports, these conditions. अच्छा ठीक है, लुको मैं चेक करता हूँ out of the box में क्या क्या है. These reports will get out of the box. No need to be created. Zero efforts. Okay. Right? This part has been done. The last part, which is important, and you can export to the PDF as well, if you want. ठीक है, होमवर्क मैं देता हूँ आपको अभी. Export. ये आपका होमवर्क है. Maybe someone can take a note and put in the chat box so that everybody can get idea. ठीक है. Homework is that I downloaded this report. ठीक. ठीक है जी. बढ़िया दिख रहा है सबको. It's showing title, query condition, and all the things will be there. ठीक है. Now I want on the top, on the header, I want my channel logo should be there. LNG, welcome LNG, and all the things will be there. In the footer, one different image should become. कैसे होगा ये चेंज? I don't want to be show these things. मैं क्यों किसी यूजर को बताऊं कि ये किस कंडीशन पे रन हो रही है या ये किसने रन करी है. I want to remove these options from here. This is your homework. बढ़िया अंकल, ठीक ठाक. जी ठीक. So this is your homework to find out कि ये
कहाँ चेंज होगा? इजी है, बिकॉज रिमेंबर every module has an admin module as well. मेरे फोन का in my phone I am the admin. I can do anything. I can add anything on my screen. I can remove anything from my screen. It means I'm giving you the clue. In the same manner for the problem, for the reporting as well, we have a report admin. जाना, झांकना और लेके आना रिजल्ट इसके. ठीक है? तो now come to this particular part. Add to dashboard. Dashboards क्या होते हैं? Let me save this report. ठीक है? Dashboards are nothing. Dashboards are the collection of the different reports. जैसे ऑर्डर गाइड था. ऑर्डर गाइड क्या था? खुद में तो कुछ नहीं है, बट ऑर्डर गाइड इज अ कलेक्शन ऑफ द different catalog items. In the same manner, we have a dashboards. Let's come back here and search for the dashboard. And anybody can create a dashboard. Again, the way ServiceNow provide the report, in the same manner ServiceNow provided the lot of dashboards as well, out of the box dashboards. देखना है ये देखो. Incident dashboard. If anybody of you work in the NOC, जो नेटवर्क ऑपरेशंस या नेटवर्क कमांड सेंटर जिसे कहते हैं, इफ एनीबडी वर्क इन दैट यू विल सी उनके वहाँ बे में जाओ या जो उनके सिटिंग वर्क प्लेस रहते हैं, दे हैव अ वेरी बिग बिग स्क्रीन्स और उनको पता नहीं क्या क्या रन होता रहता है, ग्राफ चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ डैशबोर्ड्स होते हैं. देखो, लेट मी स्क्रॉल डाउन दिस. ओपन टुडे, अनअसाइंड, ओवरड्यू, इंसिडेंट प्रायोरिटी, इंसिडेंट स्टेट, ये तो मेरे वो हैं फिल्टर्स हैं, इंटरेक्टिव फिल्टर्स इसे हम कहते हैं. बट ये सारे मेरे क्या हैं? रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी, काउंट वाली, ग्राफ वाली, जितना मर्जी बड़ा डैशबोर्ड बना दो. ठीक है? नाउ लेट क्रिएट अवर ओन डैशबोर्ड. क्लिक हियर, न्यू डैशबोर्ड. ठीक है? LNG group. Which group has the rights to maintain this dashboard? I said nobody. Let's say Batch15. Maybe they don't have a proper role, so it's not showing here. Okay. Let's say to the roles who cannot see this dashboard or cannot edit anything in this dashboard. We can put the roles here. ठीक है? और disable the multiple element selection. मैं नहीं चाहता कि कोई एक साथ multiple चीजें change कर पाए. तो I can do this particular part and just save it. ठीक है? अब तो ऐसे करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा. ये तो बहुत मुश्किल काम है. Now let's come back here. Dashboard. On by me. यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं आप. LNG. अतुल ये तो ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं इसमें. What it's saying? Add widgets using the widget picker. Means now I need to add my reports here. I can click on this. नहीं, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए नहीं. मुझे तो देखें, पहले मैं अपना फॉर्मेट डिसाइड करता हूँ. मुझे तो ऐसे फॉर्मेट चाहिए, ऐसे बॉक्सेस में, 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 ऐसे बॉक्सेस. मुझे ऐसे बॉक्सेस में चाहिए. ठीक है? मतलब कि एक साथ 12 रिपोर्ट्स आ सकते हैं. चलो, गुड. ठीक है, ये हो गया. नाउ कम टू द विजिट. विजिट क्या है? रिपोर्ट्स. इट्स रेफरिंग टू द रिपोर्टिंग ओनली. किस में जाना? मुझे रिपोर्ट्स में जाना. ओके, ठीक है. यहाँ पर ये मेरी रिपोर्ट थी LNG जो हमने बनाई. ऐड करना है. यस, ऐड आ गई. नहीं अतुल, मुझे तो एक और भी ऐड करना है. चलो ठीक है, आ जाओ पीछे, आ जाओ. ये वाला कर लेते हैं. LNG ऐड करना है. यस, वो नहीं ऐड हो गया. देखो ये ना ऐड हो गया. Up to you. You want to add? You can add it. There's a difference.
which I missed out in the reporting. In the report we can share, but if I share a report with you, you can edit my report as well. लेकिन डैशबोर्ड के केस में ऐसा नहीं है. मतलब कि अगर अल्टीमेटली मुझे किसी रिपोर्ट को चेंज करना है तो मुझे रिपोर्टिंग रोल चाहिए ही चाहिए. सो व्हाट वी डू, वी पुट द ACS ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, जो हम टॉपिक आगे करेंगे. सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट्स. और बताओ, लो ये कर देते हैं. एक मिनट रुकना देता हूँ. हेलो, ओके, ठीक है. तो रिपोर्ट में अगर मैं इफ आई शेयरिंग द रिपोर्ट, एनीबडी कैन चेंज इट, बट डैशबोर्ड में ऐसा नहीं है. लो एक और ऐड करते हैं, फिर विल कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देते हैं. अतुल रिपोर्ट्स तो बन गई सारी है, देखो रिपोर्ट्स बन गई, लेकिन मजा नहीं आ रहा है. तो यार हमने तो फॉर्मेट कुछ और पूछा था, आपने फॉर्मेट कुछ और बना दिया. कैसे एडिट मॉडिफाई करें? Go back here. When you click on this, yesterday same thing happened with my friend. She was doing some testing, or she was not able to edit this report. नहीं हो रहा. तो मैंने बहुत ट्राई किया. मैंने कहा एक काम कर, इस पर क्लिक करो 3 लाइंस पे. ठीक है, मैं अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन एडिट द कंटेंट. मतलब कि आप इसको एडिट कर सकते हो. और नाउ यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल. ये ऐसे करके these things you can easily do. अगर फिट होगा तो वहां पे फिट कर देगा उसको. ठीक है, यू वांट टू पुट सम कस्टम बैकग्राउंड. ठीक है, कलर चेंज कर लो. लड़कियों की इच्छा होती है नीला पीला हरा गुलाबी सब होना चाहिए, कर लेते हैं इसे. ठीक है, तो दैट इज अ वन थिंग. सेकंड थिंग, अब तो ये तो एक ही डैशबोर्ड बना, मतलब कि आई वांट एक डैशबोर्ड में यहाँ इंसिडेंट हो या चेंज हो या प्रॉब्लम हो, देन वी हैव टू क्रिएट अ टैब. कहाँ गया टैब का ऑप्शन? हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं. ओहो सॉरी. एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस और यू कैन ऐड ए टैब एज वेल. यहाँ पर भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे ठीक है, वहीं से होगा. फिर ऐड ए टैब, एक नया टैब ऐड कर सकते हो. देखो यहाँ पे टैब्स, tab 1, tab 2. The only thing is that I guess before 2 or 3 releases or 4 releases back, there was an option that dashboard get auto refresh, but abhi auto refresh nahi hota dashboards. If you go to community, you will find people will say that you can use the extension, Chrome extension, to reload the window after 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes kind of things. Lekin ServiceNow did not provide anything out of the box which refresh the dashboards. ठीक है, now this is my tab 1, this is my tab 2. You want to rename it, डबल क्लिक और रीनेम कर लो उसको. ये इस पे क्लिक कर दो पेंसिल आइकन पे. लेट्स से प्रॉब्लम, चेंजेस, रिक्वेस्ट, नॉलेज, अप टू यू, यू कैन डू इट. ठीक है, नाउ आई कैन शेयर दिस डैशबोर्ड. आई कैन शेयर विद ऑल, ग्रुप, यूजर एंड रोल. ठीक है, लेट्स से आई वांट टू शेयर इट विद Batch15 or Amisha only, or let's say Mac as well. ठीक है, ये. And I can say they can view or they can edit. I want only view. Edit नहीं कर देना मुझे किसी को. If edit कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा.
क्यों? क्योंकि it's my dashboard. I prepared this dashboard for my purpose and just sharing for the team to be support on that particular part. ठीक है? So this is a small part of the dashboard here. मैं एक मिनट देख लूँ, कुछ बोल तो नहीं गया ना मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? I'm missing something here. हाँ, एक चीज important. Good. Again, I learned this thing from community. और पता है, these are the reasons that I'm asking everybody to go for the community. Let's say I have a dashboard. Come here and open dashboards. ठीक है, change का dashboard है, बहुत बड़ा. I want to see a report which is be on my dashboards. मतलब कि एक रिपोर्ट किस डैशबोर्ड पर है, how I can see, or I want to see that a dashboard contain how many reports, उसका dependency graph क्या है. So what we can do, you can click on this. ये कहाँ गया वो? चेंज को मैं बताता हूँ. ये ना बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ से आया था वो ऑप्शन. हाँ, लेट्स गो हेयर एंड गो टू लॉन्च डिपेंडेंसी असेसमेंट. ओपन. ये डिपेंडेंसी सेट अटैचमेंट आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर चेंज, इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी रिपोर्ट्स यूज हुई हैं. So on the change, we have a tab called the change overview tab. Click on this. इसमें total ये reports हैं and 6 more. ये I want to see this report. Okay. इस report पे ये condition बनी हुई है. One more drill down. और ये condition इस table पे बनी है. इससे ज़्यादा drill down आप नहीं कर सकते. Means I want to see that how a report is working on a dashboard. I can use dependency assessment. Let me change my dashboard. Let's say incident. इसमें 4 टैब्स हैं. ये ओवरराइड कर हर एक को. ऐसा नहीं कि आप यू कैन सी एवरीथिंग टुगेदर. नो, यू कैन क्लिक ऑन द ऑप्शन हियर. यू कैन एडिट और शो यूज बाय कि ये और कौन कौन यूज कर रहा है. इट इज यूज्ड बाय दिस ओनली ऑप्शन, शो यूज्ड बाय. बस इतने. एंड यू कैन सी हियर एज वेल सम फिल्टर्स. अगर मैं लेट मी गो बैक ऑन दिस पार्ट अगेन. अरे क्यों नहीं चल रहा? Let me reload this page. Because sometime when you learn new things, you have to do the practice as well, जो हम नहीं करते. मैंने पढ़ा, मैंने समझा कि हाँ अच्छा ये होता है, that's good. So now you can see. ठीक है, देखो वो टैब्स की बात कर रहा है. And let me say, see, ये कह रहा है ये PA का विजिट है, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स का विजिट है, ये टैब है. Let me open this. See, ये फॉर्मूला इंडिकेटर है. Means we put some formula in the performance analytics. We can do the formulas as well, जो हमारे standard reporting में नहीं होते. Percentage easily नहीं होता. I want to see that how many change failed or how many percentage of change failed during this phase. ये काम PA से होता है. And I have no idea on the PA. Really sorry on that part. Click on this. So now this. These are the breakdowns. शायद यहाँ पर नीचे होगा. दिखा रहा कुछ लिंक ब्रेकडाउन. अच्छा ब्रेकडाउन से हो, राइट. सो दिस इज द वे दैट वी कैन ब्रिंग और वी कैन यूज द रिपोर्ट्स ऑन द डैशबोर्ड एज वेल. जो 2 कंसेप्ट रह गए हैं, दैट इज डेटाबेस व्यू और द मैट्रिक. वी विल डू इन रिटर्न. डाउट, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन. No. इंटरेस्टिंग है, राइट? Yes. Yes. So during this weekend, do a practice of this.
ट्राई करके देखो, मल्टीपल टेबल्स डैशबोर्ड्स बना के देखो, करके देखो, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैक एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. Let me stop recording and take attendance now.